एडिट करके आप मत डालो, आपने ये filter, इफ यू हैव यूज दिस फिल्टर दैट फिल्टर, और उसको आप अपडेट कर रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं और उसको आप यूज कर रहे हैं, तो इट विल कंप्रेस इन साइज एंड विल नॉट दैट हेल्पफुल. ओके, Yes. आई हैव शोन ये कितना क्लियर इन्हें पिक्चर यूज किया है. नाउ नेक्स्ट, एज आई वाज टेलिंग कि कितने टाइप ऑफ फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम पोस्ट कर सकते हैं. देर आर बेसिकली 4 टाइप ऑफ फॉर्मेट्स. पोस्ट बोलते हैं जो हम न्यूज फीड होता है, दोज न्यूज फीड्स एक ट्रेडिशनल कंटेंट फॉर्मेट है जो हमारी मेन प्रोफाइल ग्रिड में विजिबल होता है. दोज आर दी पोस्ट फॉर्मेट, जिसको हम न्यूज फीड भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट विल बी अ carousel where Instagram provide us 10 images to post together. Maximum limit is 10 image. We can post 10 images together, one after the other. It will be a carousel. You can browse, explore like this. ऐसा hover कर सकते हैं and you can see the 10 images in a continuous manner. So that pattern is called carousel posting. Next is reels. Reels are the very engaging content by Instagram. Those these are called जैसे YouTube में shorts होते हैं, हम वहाँ रील्स शॉर्ट्स जो देखते हैं, वैसे इंस्टाग्राम हैज क्रिएटेड रील्स. इट इज अ शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट जो दोज आर वेरी इंगेजिंग, और इसका मैक्सिमम 60 सेकेंड का टाइम लिमिट होता है. इतना बड़ा आपका वीडियो होना चाहिए, इससे ज्यादा बड़ा नहीं, इससे कम चलेगा बट इससे बड़ा नहीं. ओके, एंड स्टोरीज, लाइक आई टोल्ड बिफोर, स्टोरीज के बारे में मैंने काफी अच्छे से बता दिया है कि दीज आर पोस्ट which appears for 24 hours and then it disappears. It is for your followers. You can save your stories as a highlight in your profile also. If you think that this story is very good of mine, this will be helpful if this stays on my profile, then you can add it to your highlight and give a beautiful title to the highlight. Like you are doing a ramp walk, you have taken a video of it, so you are posting it on your Instagram in a form of a story, but you want that these videos should be forever on your profile. So what you can do, you can just save it on the highlight part and just give a title, ramp walk या fashion show 2024. In this way you can save your story as a highlight. So these are the 4 type of content we can share using Instagram and Facebook. Next we move on to, see, again, this part covers the story. As you open the Instagram page, there is a plus sign here. When you click on this plus sign, uh, it will give you 4 options: post, story, reel, and live videos. So as I'm explaining story here, so if you are, so we will click on the story. We'll click on the story, we will get this window. Now you can instantly create create a video. आप यहाँ पे click करोगे and you can take a video of then and there only, and you can post it. Now then you will tap to your story. This is at the bottom of your screen. यहाँ पे जब आपका यहाँ पे you can add many things like आप text use कर सकते हो using this AA sign. This emoji will give you a number of options. You can tag somebody, you can use very branded hashtags. आप वहां से you can go through it. आप hashtag search कर सकते हो, वहां पे मिलेंगे आपको. Then you can put emojis, GIFs. It will provide you n number of options when you click here on this emoji section, this emoji icon. Okay, then this star thing will give you a different way of posting. सीपिया मोड में पिक्चर पोस्ट करना है मुझे, ब्लैक एंड व्हाइट करना है मुझे, ग्लिटर डालना है, आई वांट टू पुट इट इन कलरफुल फॉर्म, 4 5 नंबर ऑफ कलर्स आए. तो देर आर दीज टाइप ऑफ ऑप्शंस विच इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोवाइड. तो वो हमको ये यहाँ से मिलेगा.
ओके। और अभी स्टोरी में अभी हम बहुत सारा एंगेजिंग, वी कैन मेक दैट मोर एंगेजिंग विथ लाइक, हमने एक फोटो पिक्चर पोस्ट किया एंड आई कैन क्लिक की, आई कैन राइट देयर ऐड योर्स, और मैंने वहां पे एक कैमरा आइकन डाल दिया, तो इट विल एनीबडी whenever picture people will click there on the camera icon, they can post their picture itself using your story. तो these are the different ways. Actually story का part is very deep, we cannot cover here in this five minute of session, मतलब इतना बहुत ज्यादा है डिटेल। तो दिस आर दी बेसिक थिंग आई कैन टेल यू हियर, कि हम ये 4 चीजें यूज करके एक बहुत ही अपीलिंग स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर यू हैव डिसाइडेड ऑन ऑल दी थिंग्स, ऑल दी एलिमेंट्स, टेक्स्ट एंड एवरीथिंग, टैग्स, then you can click on your story and that will be posted on your Instagram and your Facebook if both are synchronized. Okay, synchronize your profile on Instagram and on Facebook if are synchronized or connected by a Meta is a business suite which Insta and Facebook are using to connect these two platforms. तो यू कैन कनेक्ट बोथ योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थ्रू मेटा, और फिर आप जब भी पोस्ट करोगे, इफ यू आर पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम, इट विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन योर फेसबुक ऑल्सो एंड वाइस वर्सा. So this way you can utilize such new tools for your posting purpose. Okay, so this way we can share the story by clicking on this blue button which is shown here, and this is all about story. Now next we move on to, again, highlight and story I have already covered. Like whichever story you want to keep on your profile forever, you can save it uh, as a highlight and keep it there. Uh, what can be the best stories for a product or a services? You can post behind the scenes, जो हम वो ग्लिम्स हैं वो हम वहां पे पोस्ट कर सकते हैं ऑन दी स्टोरी सेक्शन। किसी प्रोडक्ट का टीजर है या फिर कुछ फिर और डेली अपडेट्स है वो हम डाल सकते हैं। क्रिएट हाईलाइट्स टू शो योर बेस्ट स्टोरीज एंड ऑर्गेनाइज देम बाय थीम। There are different themes which I told earlier also. We can use those themes to highlight our stories. Um we can use interactive stickers and features to boost engagement. These are the same things which I have covered earlier also. जो emoji section में मैंने बताया था कि वहां से we can use these stickers and different features provided by the Instagram. Okay, so now next is the post. Similar way, like we have posted for the story, same we'll click here on this plus sign. Now we will choose post option. We'll click on the post now. Then after choosing post, I'll select a picture from my gallery, from my phone gallery, and then I'll put it here and I'll press a next button to it, and then there will be few options. You can edit your post there itself. Like you can change the look of your post, like normal, Paris, LA. There are many options. When you browse it now, you will get to know different types of screen. Okay. So in that way, you can choose one whichever you like, and then you can tap on the next to continue to a new page will open. And here you can write a very captivating caption. You can tag people here. You can enter a location, and many other options are there. You can all the details, you can fill up the all details, and then you can share your story by this button. Okay. Yes. If you are posting a post having having a picture of you with Stree Foundation, with Mrunal Entertainment, you can tag Stree Foundation, Mrunal Entertainment on your post.
This is the right way of posting and tagging people on your post and your stories also. Okay, should I move forward? Yes. Yes. Okay, I know it is a lengthier I must say कि सबसे lengthier class होगा because it is vast. Digital marketing is vast. So next is मैं थोड़ा जल्दी जल्दी cover करती हूँ. Next is post Facebook पे भी this is the same way of posting things on Facebook. We'll click here what's on your mind. This is the section where we can post a video and image or a creative. If you're running a product or services, if you are into a some business, तो यहाँ हम click करेंगे, then your camera roll will open. You will get these options. You can choose any. Then there will be a layout. If you are choosing multiple options, then you can choose 3 4 options and put it here. It will be shown like this. Also you can choose a layout. Choose layout में there will be 3 or 4 types of layouts which Facebook provide us to represent our post. कभी वो देगा कि एक image will be pinned and the other images will be smaller. Sometimes it will be equal size. पूरा grid एक ही size का होगा. So this way Facebook provides us different types of layout to post a feed, a news feed or a post. Okay, then again you can add into any particular album. For say आपने फैशन शो का एल्बम बनाया, फैशन शो 2024 आपको आप बार बार पोस्ट कर रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज ऐड दिस पिक्चर टू दिस पर्टिकुलर एल्बम थ्रू दिस प्लस बटन. आप एल्बम बना लो and then always click here on that plus and add those picture to those album. Now, similar way, tap to add more photos if you want to add more. And if you want to tag people, there is option there also to tag people. If you if it is all done, now you can tap to share. What are you feeling or doing? You can tap location. It also Facebook also gives you, how are you feeling, excited, uh, और different options. आप जब वो explore करोगे ना, there are many things. Excited है, you're sad, you're happy, और ऐसे options है. You can tap on that and that emotion will be shown there on over the post. Like Ankita Shaha is excited for fashion show 2024 and then the pictures. This way it will be shown on your profile. Okay, you can tag a location also, and then you can just put tap edit to edit your photo. If you want to edit there itself, it also provide you एक edit करने के लिए there is a magic pencil there. You can click over there and then you can up edit it there also. और फिर आप इसको पोस्ट कर सकते हो with this blue post button. Okay. Yes. इफ यू ऑल आर लाइक जब पोस्ट करते समय प्रॉब्लम आएगा तो आप मुझे अपना हैंडल करने देते ना. आई विल मेक इट इजी फॉर यू ऑल. ओके, सो हाउ टू अपलोड अ रील. सी रील्स आर दी अभी सबसे ट्रेंडिंग है. रील्स सबसे ज्यादा वॉच्ड है. ये बहुत एंगेजिंग होता है. मोस्टली हम जब भी अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक एक्सप्लोर करते हैं, वी मोस्टली वॉच रील्स ओनली. So, this way we can access the reels. Uh, if you see this picture, the first picture, this is the way we access a reel. Then we can select a video. Okay, that plus sign, if you remember on the last screen, if you click on the plus sign, there is an option called reel. You are clicking on that, and after that click, you will see this first page. There will be options of video which you want to post as a reel. Then you have selected a video. Then you can edit the video. You can add a music.
You can add an emoji. This way you can add it here, and then choose a cover or and write a great caption to it. From all your reel, you can choose a single picture from from your reel itself. First, it is not like कि आपका जो फर्स्ट स्क्रीन पे है वो ही कवर की तरह, थंबनेल की तरह शो होगा ऑन योर प्रोफाइल. यू कैन चूज, अगर आप हुवर करेंगे तो यू कैन चूज ऑल दी फ्रेम्स. आप उसमें से कोई भी एक फ्रेम ले लो एंड यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर image as your cover image, and then you can choose your add on button. और वहां पे variety of options है. You can tag people, same thing like we have been doing for other things. Same here, tag people, add message button. आप वो add message button डालोगे तो रील के नीचे एक ब्लू कलर की लाइन आएगी जहां पे लिखा रहेगा ऐड मैसेज. तो अब वहां क्लिक, कोई भी अगर कोई फॉलोअर वहां वो आपका रील देख रहा है, वो वहां क्लिक कर रहा है, तो इट विल डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अ डीएम. वो आपको मैसेज करेगा आपके मैसेज बॉक्स पे. तो दीज आर दी ऑप्शन, दीज आर दी ऑर्गेनिक ऑप्शन आई विल से. हम जब इसको पेड करते हैं तो इट विल शो और ज्यादा, मतलब देर आर मेनी ऑप्शंस, बहुत स्कोप बढ़ जाता है. देन हम ऑडियंस चूज कर सकते हैं. एक बेसिक जनरल ऑडियंस देता है, प्रोवाइड करता है हमको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक वाइल पोस्टिंग अ ऑर्गेनिक पोस्ट, ऑर्गेनिक रील ऑल्सो. टॉपिक्स देता है, फैशन रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड है, स्पोर्ट्स रिलेटेड है, फिटनेस रिलेटेड है. तो हम टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, लोकेशन ऐड कर सकते हैं, हम एक कैलेंडर ऐड, रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं जो हमारे रील के पोस्ट, ऑलवेज इट विल बी सीन इन आर reel that on this particular date this event is happening. So that is a reminder calendar option provided by Instagram and Facebook. Now we can share that reel directly from Instagram to Facebook also. So there is an option share to Facebook. If we switch it on, then it will be shared on both the platform. And there are advanced settings also. You can go through it and explore it. Okay, in this way, you'll click on the share button and your reel is posted. Okay. Now, next will be click again. Now, if you will click here on the plus sign in the navigation bar, select post, select multiple. Like I told you, you can select up to 10 photos or video. आप अगर if you're posting video, then you can post only one video. And then you can tap next. This is the same thing which I have already, covered. Or you can edit photo video with the filter and tap filters and tap next to it. And then you can add captions, tag people and add location to share it. So ये carousel के लिए जो जैसे हम simple one post करते हैं, we can post 10 pictures together and it will be called as a carousel post. Okay. Now Yes. hashtag. hashtags में क्या है कि the hashtags will give you a organic reach to maximum people. So the most important thing is ki how to choose a hashtag. We need to always mix the hashtags. That should be a very niche specific होना चाहिए. आपका if you are a model, then आपका hashtag should be fashion show, hashtag modeling. So this is your niche. Niche मतलब that particular profile, वैसा वो आपका मार्केट है. दैट इज योर पर्टिकुलर मार्केट एंड यू विल बी यूजिंग दैट हैशटैग फॉर श्योर. और फिर होता है वंस टू, दिस विल हेल्प अस इन टारगेटिंग द आइडियल ऑडियंस. ठीक है. आइडियल फॉर बैलेंस. हाँ, वी शुड यूज अ ब्रॉडर एंड अ स्पेसिफिक हैशटैग ऑल्सो. व्हेन वी चूज हैशटैग्स, then we see ki which are the most, whenever you write hashtag for say modeling, then there will be hundreds of options which open. Then you have to decide which to choose.
the most popular one, how we'll decide which is the most popular one? You'll see the number of reach which is written over there. आपने hashtag modeling लिखा, नीचे पे दिखाएगा reach is 2 million, reach is 200 million. This way it is written, वहां reach लिखा होता है. तो this way you should always use up to 30 hashtags. हमको यूज करना चाहिए. 10 to 15 should be optimal. यूज करना ही है 10 to 15. और उसमें ये डिसाइड करना है, you should mix a popular, model, moderate and a niche hashtags. तो popular यूज करने के लिए see the maximum reach hashtags. then moderate hashtag यूज करो, उसमें thousands में होना चाहिए. First it should be on millions, then should be on thousands, and then the niche will be very few, like 500, 600. वैसा आपका niche hashtag होगा. So this way always decide on your hashtag with this technique. Okay. It should be relevant to your content and the audience. Avoid using banned hashtags and over generic hashtag. हमको बहुत ज्यादा ऐसा billions वाले जो hashtag होते हैं ना, we should avoid it. Otherwise our data, our content will be lost. क्योंकि वो ओवरलुक हो जाता है जब इतने सारे कंटेंट, मतलब बिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग, देन दोस कंटेंट्स आर लॉस्ट. So avoid over generic hashtags. Now limit your hashtag, as I told, 10 to 15 should be optimal, or 30 should be maximum as per your post. Uh, Create branded hashtag for a specific campaign on your brand or your brand. जैसे मैं हमेशा यूज करूंगी hashtag digital wings, so that after some time there will be hundreds, 500s, thousands of posts with this hashtag. Okay. Now next will be interacting with your audience. You should always, nurture your audience. If somebody is commenting or giving you a DM, then promptly आपको उनको reply करना है, आपके followers को reply करना है, comment या this insights if your profile is a business or a creator's profile. तो फॉर दिस यू नीड टू बी, आपका प्राइवेट प्रोफाइल है तो यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस प्रोफाइल, देन ओनली यू कैन सी ऑल दिस इनसाइट्स. ओके, दिस इज वेरी वास्ट, आई कैन नॉट कवर दिस थिंग, जिसमें आप रीच, इम्प्रेशन, एंगेजमेंट रेट, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो. Okay, so the conclusion is Instagram and Facebook offers endless opportunities for your personal and business growth. So by following these steps and staying consistent on your profile, you will build a strong presence and connect with your audience effectively. So thank you all for this wonderful session. I hope everybody got things clear, a basic awareness. This was a basic awareness session for marketing for the platforms like Facebook and Instagram. If you have any queries, you can just ask quickly. I'll try to clarify things. Anything to ask? To have queries, actually, we need to start using it. Unless and until we start using it, we won't be Yes. able to, realize where exactly we need assistance, or where we need to work more or understand things better. Yes, yes. So I'll Anjita ji, suggest. Yes, बताइए. yeah. Thank you for this session because it really covered like the basic elements of everything. My Yes. query was basically ki, can we have two profiles on the same platform? I tell the reason behind it. Like supposing I'm not supposing I am professionally working and engaged with
some particular audience, and my Facebook profile is like that. Now, if I am contesting into this, participating in this fashion show, this is completely different me. And probably I would not like some of the friends or the followers who are already there on my profile to know about it. I'll like to maintain some secrecy for some particular audience. So उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि एक जैसे स्टेटस के लिए हम करते हैं व्हाट्सएप के कि हु कैन सी माई स्टेटस, वैसे कुछ किया जा सकता है या यू एंटायरली नीड टू क्रिएट अ डिफरेंट प्रोफाइल? सी वहां ऑप्शन होता है, जब आप शेयर करते हो तो आप अपने फेवरेट्स को दिखा सकते हो, या फिर यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट पीपल की यू कैन सेलेक्ट मैनुअली, आप सेलेक्ट कर सकते हो बाय नेम्स कि मुझे ये पीपल को आई वांट टू शो दिस पोस्ट टू दीज पर्टिकुलर पर्सन्स, तो वो सिर्फ उनको दिखेगा, बाकी और दूसरे ऑडियंस को नहीं दिखेगा। नाउ आपका फेसबुक पे एक प्रोफाइल है और आपको आपने उस पे 2 डिफरेंट पेजेस ओपन किए हैं, ठीक है? तो यू नो आपका आपका पर्सनल प्रोफाइल विल नेवर गेट हिंडर्ड थ्रू दोज पेजेस, बिकॉज दैट Okay. पेज वर्क्स इंडिविजुअली, and your profile is the main profile through which you are accessing those pages, but those Right. page cannot access your profile, your main profile. Okay. Yes, So then you can ask a particular audience to follow that page yes, instead of the profile. yes, definitely. Okay. Thank you. I hope we should wind up. I think I should wind up. All clear? You can contact me personally. My phone number, my details has been shared by Prachi ji. For any, for your business or for your personal profile, setting up, maintenance, doing social media, you can connect with me anytime. Okay, so my number is provided. Thank you for this session. You all are beautiful. I don't know how Prachi ji will decide ki kisko who will win. All are looking very pretty. Yes, thank you Okay. so much, Ankita. Prachi had just called. She said she had called you twice, but then you were in this meeting. She had some Yeah, customer right now. So she has Okay. just told to thank you on Stree Foundation, on behalf of Stree Foundation. And just that is Okay. what I am doing the formality. Okay. Thank you so much for this lovely session. Thank you again. Thank you again, Thank everyone, for the time. Thank you. you. Goodbye. Good Thank you so night. much. And bye. Thank you. Bye. Thank Bye. you so much. Bye, Bye bye. everyone. Good night.